Hello dear students, I Abhinav Negi welcome you all on BYJU'S exam prep. Guys, in this session me, Rita ma'am and I will be taking the complete BARC mock test. Okay, what is the pattern of the gate, what is the pattern of the BARC guys? Total 100 questions. Okay, every question will be of 3 marks. So 100 into 3, that is 300 marks. Okay, every question is of 3 marks. So total it will be of 300 marks guys. Time allotted to you will be 2 hours. Okay, for every question plus 3 and minus 1. What is the syllabus? The syllabus is all technical subjects plus engineering mathematics. Okay, but math you should not expect 10 to 15 questions. So relatively lesser topics are, or 4 to 5 questions are coming. If I talk about the cutoff, this 100 questions, every question of 3 marks, total 300 marks. For every question plus 3 or minus 1 by 3. There are only MCQs, no MSQ, no NAT, no subjective, 2 hours. And guys, if I talk about the cutoff guys, then cutoff of BARC through written test was 102 last year out of 300 marks. This less cutoff is due to both. The paper is not as simple as some other like state services or PSUs which take their own exam like HPCL exam, BHL exam. It is not as easy. Okay, little bit tougher side, not as tough as gate 2 mark question, but relatively lesser than the gate 2 mark question and higher than the other exams. Plus, one reason is that, second reason is that in 2 hours you have to solve those 100 questions, and those 100 questions are not like other exams. Okay, and before that the cutoff was, I guess, approximately, I'm not remembering exactly, it is 142 or 143 out of 300. Okay, the previous cutoffs guys, through written test. Through gate exam it is around 800, 850 or 750 gate score. Okay, now guys, this is about me. Those who don't know me, my name is Abhinav Negi, having 12 plus years of teaching experience, done my MTech from IIT Delhi. Guys, this is my Telegram group, Civil by Abhinav sir. You can join us here guys. More than 6,000 students have already joined, and GATE 2025 foundation course has started guys, where I started SOM, and now other subjects will be coming. Scholarship test, if you want to enroll in BYJU'S, will be on 14th of April. You can give this test guys and get discounts. This will be on 14th April. You can get 90% discount, 80% discount, 70% discount depending on your score on that test. Also guys, there is a workshop that I'll be taking on 20th March guys. This is a free workshop, absolutely free workshop guys, for 40 minutes. Please do register it. Okay, it will be at 7:30 PM on app, where I'll be telling you the journey of every student. Okay, how an average student can be a topper in GATE 2025. Okay, that journey from average student to GATE topper, 20th March. This ground zero series is running on app guys. You can join this as well. And this is the schedule of the YouTube series. Okay, this is the schedule of the YouTube series. So may have done. You can see these classes. Now Dheeraj sir will be taking on weekend. Then it will be Richa ma'am will be taking environment, and then Chandrasekhar sir will be taking fluid mechanics. Okay, now guys, there are complete courses in our app, Vision 2025 and 26. Here we are teaching each and every subject from basic level. Complete course are there. Okay, the courses are available in English and Hindi both. Okay, if you want, you can join them, and you want to know any inquiry like fees, study plan, timings, whatever. So either you can connect this number for query, or guys, there is a Google form in the description box. You can fill that form and have one-to-one counseling with our counselor. Yes, Rotela sir, welcome. Shall we start guys? So question number 1 to question number 50 I will be taking. Question number 1 to question number 50 I will be taking. Then question number 51 to question number 100 Richa ma'am will be taking. Okay, so I will be taking guys SOM, Maths, Soil, Survey, OCF, Building Materials and Highway Engineering, and remaining subjects will be taken by Richa ma'am. Ready guys, everyone? Please tell me. Everyone ready? Okay, so this is the first question guys. Please on the comment box write the answers. Please on the comment box write the answers. Come on, they are asking the shear stress value. What
is the shear stress value? Tell me. On the comment box. Hi, Doubt Master, Chandan. Okay, see, guys, this strain is written, na? So strain matrix is epsilon xx, gamma xy by 2, and gamma xz by 2, like this. Gamma yx by 2, epsilon yy, gamma yz by 2, gamma zx by 2, gamma zy by 2, and epsilon zz. Okay, so now this is the value of epsilon xx. Okay, similarly this is the value of epsilon yy. Similarly this is the value of epsilon zz. Similarly, guys, you can find all the values. This is the value of gamma xy. Gamma xy and gamma yx both are same. So from here, gamma xy by 2 is equal to 0.001. So what is the value of gamma xy? 0.002. Now tau xy by gamma xy, tau by shear stress by shear stress, shear modulus. Shear modulus is 200 gigapascal. Answer is in megapascal. So tau xy by gamma xy is 0.002 is equal to G shear modulus. Shear modulus is 200 into 10 ki power 3 megapascal, because giga is 10 ki power 9, mega is 10 ki power 6, so it will be 10 ki power 3. So tau xy is 400 megapascal. Yes, Jagriti, good guys, everyone, great. Any doubt? Come on. Question number 2. The stress tensor is there. What is the shear stress on x face in y direction? Shear stress in x face in y direction. So guys, this is sigma xx, this is tau xy, this is tau xz. So this is tau xy, na? Sigma xx, tau xy, tau xz. Tau yx, sigma yy, tau yz. Similarly. Okay, so that is the value is 10. Okay, 2 questions are done. Guys, this one, 95 megapascal is the stress. What is the maximum stress in the plate if this is a hole here? Okay guys, what is this force? If I want to convert this in force, so force is stress into area. Area is 10 into inside thickness bt. Okay, what is force? And for equilibrium it has to be same here. 95 is the stress into area. Area is 10 into T. Tell me. Any doubt? No doubt. Now maximum stress will be here, normal stress. Okay, in this, because here the area is minimum. So sigma xx will be the maximum, because there the area is minimum. It is force. Force is 95 into 10 into T upon area. Area there is only this and this, na? That is 5 into T. That is 190 megapascal. That is C option. That is C option. Okay, this one, everyone. Right now it is not in equilibrium also, na? Right now it is not in equilibrium. 35 and 49 is 14 here, 14 here and 21 here. Okay, so this should be 7. I guess now it is equilibrium. 56, yes. Where they are asking the value of stress in segment QR, here, xx. So sigma xx, either from right you see 21 going outward and 49 inside. That is total 28 compressive. 21 and minus 49, 28. From here also guys, 7 minus 35, that is 28 only. 28 kilonewton, that means this much Newton upon area is 700 Newton per mm square is megapascal also. This is Newton, this is mm square is megapascal also.
So 7 4 ja 28, 100 into 10 is 1000, so it is 40 megapascal. It is 40 megapascal. Shall we move further? Shall we move further, guys? Everyone. Question number 5. The normal stress developed at the section SS is force by area, na? It has nothing to do with Young's modulus. Even if Young's modulus is changing, it has nothing to do. It is P by A only. Okay. Question number 6. The radius of Mohr circle gives the value of. Okay, guys. The radius of Mohr circle gives. This is tau. This is sigma. This is radius. So radius gives the maximum shear stress. Okay. But one more option can be correct. This can be MSQ also. This question can be MSQ also, guys. If it is shear strain. If it is shear strain Mohr circle, sorry, strain Mohr circle, then in that case, radius value gives, radius is equal to gamma by 2 max, na? Gamma by 2 max, na? So half of maximum shear strain. So this is also correct. Half of, because radius is gamma by 2 max. So even this can also be correct, and it can be MSQ also. In that case, it can be MSQ also, guys. Okay. Question number 7. Tell me, element is given here, sigma x is this, sigma y is this, tau x y is this. Now the radius of Mohr circle, sigma 1 and sigma 2 is asking. Radius is given by sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square. This is radius. This radius, so sigma x 110 minus 30 is equal to 80 by 2 is 40 square. 40 square by 30 square is equal to 50. Radius is 50, so only one option is there. Otherwise, you can apply the formula of principal stress also. Sigma xx plus sigma yy by 2 plus radius, and sigma 2 is sigma xx plus sigma y by 2 minus radius. What is sigma xx plus sigma 110 plus 30? 140 by 2, 70. 70 plus radius is 120. Okay. And 70 minus radius, 70 minus 50 is 20. So A will be correct. Got it? Got it? Everyone, एक बार पिक्सल चेंज कर लेना डाउट मास्टर, उससे हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क हो. ओके, चलो चलो, क्या कह रहा है? हमको बताना P पॉइंट क्या है. सबसे पहले क्या आता है? प्रोपोर्शनल लिमिट. फिर क्या आता है? इलास्टिक लिमिट. दिस इज P. ओके, इलास्टिक. उसके बाद आता है, उसके बाद क्या? R इज अपर यील्ड पॉइंट. R इज अपर यील्ड पॉइंट. फिर कार्बन एटम स्लिप होते हैं. कार्बन एटम स्लिप्स S. T इज अल्टीमेट स्ट्रेस, maximum stress, and U is the fracture. Okay, so which answer is coming? P3 Q4. P3 Q4 R. P3 Q4 R value is 1, S value is 5, and T value is 2, and U value is 6. That is C option. Yes. Okay. Now this one, guys. In the cantilever PQ as shown in the figure, the segment PQ has flexural rigidity EI. Okay. QR is infinite flexural rigidity. What infinite flexural rigidity means? That is purely rigid. Infinite flexural rigidity. Young's modulus is infinite. And Young's modulus is infinite. Young's modulus is infinite for this 1090. 1090 infinite for any value of stress strain is not coming. Okay, so guys, this is like this, but this will not bend like this. No, that is, guys, rigid, so it cannot bend like this. Okay, rigid cannot bend like this. So deflection shape will be of this is like this, and for deflection shape of this will be like this. This will not bend. Yeah, that is rigid. That is rigid. Okay. Now guys, if I am transferring that W2 here, that is P, that is Q, that is L, that is EI.
So here it will be W load, okay, and a movement WL, and a movement WL will be there. Now if you write theta and delta, now theta due to W, PL square by 2 EI, WL square by 2 EI, and deflection due to, oh sorry, leave, theta is WL square by 2 EI, due to M, what is theta? ML by EI. So M is this, so M is this into L by EI, WL square by EI. Okay, so what this value is coming? 1 by 2 plus 1 is equal to 3 by 2 WL square by EI. Correct? Correct? What you are saying? A, C. For which question? Write the question number also, na? Guys, how this is, you even guys, units are not matching here. Acha, first is deflection. Okay, sorry. First is deflection. Okay. Now, if I want to find deflection of Q, then deflection due to WL cube by 3I plus deflection due to this movement is ML square by 2I. So WL into L square by 2EI. Now total value is 1 by 3 plus 1 by 2. 1 by 3 plus 1 by 2 is 5 by 6. 5 by 6 WL cube by EI. Ninth A. No, A is not coming. None is coming. 5 by 6 is coming, guys. Please check. Deflection and slope of Q. So deflection is PL cube by 3EI. Okay. And ML square by 2EI. So 1 by 3 by 1 by 2, and none is coming. None is coming here. None is coming. If somebody asks you deflection at R, then if somebody आजा अच्छा कुछ काम अच्छा बैठो. Okay, so what is deflection at R? What is deflection of R? Tell me. So deflection of R, if you want to find out, then whatever is the deflection of Q, guys, okay, so Q ka deflection you have find out here, plus deflection of Q is from here to here, plus guys, this is theta, so this value is theta into L na, so deflection of R is equal to deflection of Q plus theta into L, and this is the value of theta. Give me yes or no. Give me yes or no, everyone. जल्दी से बता दो. Okay, फटाफट everybody on the comment section. Everybody on the comment section. वैसे YouTube पे भी आता है. Everybody on the comment section. Understood? Okay. Now question number 10. फटाफट से everybody. जागृति, डाउट मास्टर, यश, चलो फटाफट से बता दो. A bar is compressed to half of its length. ऐसा कोई बार था, टोइन. In this bar I applied a force P. Okay, and but after application of force P, the length is reduced to half. So this is L. So it is half. आधा ही हो गया भाई, 0.5 L. अब क्या पूछा? ट्रू स्ट्रेन. देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा? एफ साइलेंट इंजीनियरिंग. By default, guys, if nothing is mentioned, we take it as engineering strain. So delta by L. So what is delta? Change in length is 0.5 L. Original length is L. So this value is 0.5, and of course this is compression, so it is minus 0.5. So F silent engineering is equal to minus 0.5. Correct? Okay. So what is epsilon true? Epsilon true is ln 1 minus epsilon engineering. Actually it is 1 plus epsilon engineering, but okay, for compression it will be minus na. So ln means base E. 1 minus 0.5. So magnitude wise, magnitude of minus 2 is 2 only, guys. Magnitude of minus 2 is 2 only. So this value is coming how much?
This value is coming how much? 0.693. Please confirm. Please confirm. Please confirm, everyone. Got it? Okay. A fair coin is tossed n times. The probability that head doesn't come up on tail, then tail, then tail, then tail, then tail, then tail. So first trial tail, then tail. Okay. Then also tail, then also tail, so on. Okay. Head is not coming. So 1 by 2 की power n. Okay. And n by coin is tossed an infinite number of times. The probability that the fourth appeared exactly at the 10th time. So first time something is coming, second time something is coming, third time, fourth, fifth, sixth, eighth, ninth, and the 10th head is coming. The fourth head is coming at the 10th. Okay, the probability that the fourth head is coming at the 10th time. That means this is the same that before in 9 times 3 times head is coming, na? In this 9 times 3 times head will come, na? 3 times head will come, na? That is same, na? And in 10 trial head is coming. And these 3 can be these 3, these 3, these 3, 1 here, 1 here, 1 here, 1 here, 2 here, anything. So in 9 trials 3 head is coming, and in the 10 trial head is coming. So in 9 out of 9 trials head is coming 3 times, 1 by 2, and probability of tail is coming 6 times. Tail is coming 6 times. Okay, so this is the probability that in 9 trials 3 times head will come. So don't stop here. This is the probability of in 9 trials 3 times head is coming. So in 10 trial head can also come, tail can also come. So in the 10 trial head should be coming, that is 1 by 2. Give me yes or no. Give me yes or no, please. Okay, everyone got it? Everyone got it? Please tell me. Now, a fair 6-sided dice are rolled. The probability the sum of is 9. So guys, the 2, it can be 1 1, 1 2, 1 3. In first it is coming 1, then like this 1 6. Okay, it can come 2 1, 2 2, 2 3. In first dice 2, second dice 4. In first dice 2, second dice this. In first it is like this. Okay, then 9. In first it is 3. In first dice 3, second dice 2. First dice 3, second dice 3. First dice 3, second dice this. First dice 3, second dice 5. First dice 3, second dice 6. Okay, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. First dice 5, then 1. First dice 5, second dice 2. 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. First dice 6, then 1. 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Okay, now how many total outcomes? 36. Total outcomes are how many? 36 when 2 dice are rolled, and sum is 9. So sum 9 can be when 3 6 or 4 5 or 5 4 and 6 3. Sum will always come in diagonal, like 7 sum is 6 1, 2 5, 3 4, 4 3. Like how many cases? 1 2 3 4. 4 favorable cases of 9 out of total 36 cases. So it will be 1 by 9. Okay. What is the value of camber recommended for cement concrete roads in area of heavy rainfall? Heavy rainfall, guys, camber is for heavy rainfall, camber is for light rainfall. Camber is for heavy rainfall, camber is for light rainfall. Okay, for concrete and heavy rainfall it is 2%. Please learn that table, especially for engineering services and state level and PSU exams. In GATE they don't ask these database questions, so it is 2%. Okay guys, see, superelevation has two formulas.
E plus mu is equal to V square by GR. I am writing everything in SI unit. I am not writing that 127, 225 and all this. And second is like this. Now which to use here? Guys, this is used when you are designing the super elevation, or it is given in the question that is mixed traffic, or it is given as design velocity. Design velocity is for whole traffic. When the group of vehicles or whole traffic is designing is for group of vehicles. Mixed traffic means group of vehicles. Design velocity means this is the design velocity. Now there are so many vehicles in the road. Then this formula is used. When guys, this is the formula comes from derivation. When for a particular case they are asking particular vehicle, that vehicle which is vehicle speed, with which speed is this? For that particular vehicle which is super elevation, then you have to use this one. Now the super elevation needed for a vehicle. Particular vehicle they are asking, so we will be using this formula. E plus mu is equal to V square by 60 into 5 by 18 upon 9.81 into R is 128. This is 0.15. Please check, it will be coming A. Tell me. Good morning Anwar, late हो गए थोड़ा. 16. Guys, if ascending gradient 1 in 50, this is a ascending gradient 1 in 50 meets another, both are ascending gradient. Both are ascending gradient. So this is also increasing. 1 in 30. Then what is the deflection angle? What is this delta value? So delta value is n1 minus n2. The deflection angle is n1 is 1 by 50 minus 1 by 30. So LCM is 150. 1 by 50 value is 3 minus 5. 2 by 150 is 1 by 75. 1 by 75. 16 ka bhi Yash is saying. 16 ka bhi, yes, good Yash. Good Yash. Please, whenever you are writing A, B, C, D, mention the question number also. Mention the question number also. Okay, this one, excellent question guys. See, first statement I am checking. Magnitude of G2 is more, है ना? Magnitude of G2 is more. First statement, plus G1 is followed by plus G2. G1 plus means increasing. G2 is having higher magnitude. G2 is having higher magnitude. So G2 is like this. So plus G1 and plus G2. Okay, so this will be a valley curve. So statement 1 is correct. Statement 1 is correct. Now statement 2, minus G1 followed by a minus G2. So decreasing minus G1, but G2 is having higher magnitude. G2 is having higher magnitude. So this also will be a summit curve. Okay. So it is a sag curve. No. It is a summit curve. Convex is upward. Now this one plus G1 is followed by minus G2. G1 is plus, G2 is minus. So this will be a summit curve. Okay. Crest means summit curve. So this is correct. Statement 1 and 3 are correct and statement 2 is wrong. Statement 1 and 3 is correct. Statement 2 is wrong. Have you understood this? Have you understood this? Please tell me. Please tell me, friends. Okay. Now guys, see, this is arrival at a section and departure. Okay. This is arrival at a section
arrival, and this is departure. What is the delay? Average delay. Very simple, guys. Two methods I am telling you. Two methods. First, guys, if a person comes to my home at t is equal to 8 p.m. and goes at t is equal to 9 p.m. 1 hour delay in my home. If a vehicle is coming at t is equal to 0 seconds and going at t is equal to 10 seconds, then 10-second delay. If a vehicle is coming at t is equal to 1 second and going at t is equal to 4 seconds, so 3-second delay. So delay is departure minus arrival, na? So departure minus arrival. This is departure, arrival. This is delay. Departure minus arrival. Departure minus arrival. This is departure, this is arrival. So minus is this. This is departure, this is arrival. So minus is this. This is departure, this is arrival. Minus is this. This is departure, this is arrival. Minus is this. This is departure, this is arrival. So this is departure minus arrival. Okay, so delay is, total delay is area of this. What is area of this? Half base into 40. So it is 600 seconds. Half base 30 into height. So what is average delay? 600 is total delay upon 40 is equal to 15 seconds. Is equal to 15 seconds. Okay, now second method. Everyone will tell you by one method. What is the delay of first vehicle? Delay of first vehicle. It is coming at 0 seconds and going at 30 seconds. Coming at 0, going at 30. 30-second delay. Coming at 0 and going at 30. 30-second delay. Delay of last. Last vehicle is coming at 40, going at 40. So 0. So average delay is, first vehicle delay is 30, last vehicle delay is 0. Average 30 by 0 is 2 is 15. But some will tell you two methods also, but they will not tell a line that I am telling you. If guys average delay is 15 seconds here, if average delay is 15 seconds here, from this method, this is only applicable when there is a linear relationship, because first is this, last is this, and divide by 2. This can be done only in linear relationship, but that area wala thing is applicable only when it is curve also, then also it is applicable. Like in working stress method, this is sigma CBC, this is 0, this is sigma ST by M, whatever. So what you write, average stress is sigma CBC plus 0 by 2. Average stress into area is B into XA. So this is only applicable when it is linear. For limit state method, guys, you don't write 0.45 FCK plus 0 by 2 into B into XU limiting. So there you write the 4 area of stress diagram into width. So this kind of things, that first by last by 2 is only applicable when there is a linear relationship. Mayank, kaise ho Mayank bhai? Open jeep kaisi hai? Have you got that second method is only applicable when there is a linear relationship. Got it? Okay. How to do this? Tan alpha 1 by tan alpha 2 is K1 by K2. K1 K2 is given. Alpha 1 K1 K2 is given. We can find out the value of alpha 2. What they are asking? Alpha 2. Okay. Okay. Which of the following equation correctly gives the relationship between specific gravity I and this? Critical gradient G minus 1 upon 1 plus E. So 1.5 is equal to G minus 1. G is equal to 1.5 I. G will 1.5 I plus 1. 1.5 I plus 1, that is C option. That is C option. Tell me yes or no. Tell me yes or no, please. Everyone. Okay. Guys, when is the liquid limit? When number of blows are how much? For how many number of blows we get the liquid limit? Tell me in the comment box. For how many number of blows? For how many number of blows we got the liquid limit? For 25 number of blows. When number 25 blows closes the groove.
So you will be getting 18.6%. Okay. This one, take this as homework. You just have to apply Darcy law here. This also very easy. So take it homework. Tell me answers in the comment section. Take this as also homework. 3 question homework I am giving you. Do this. मैं भी अच्छा हूँ अंक. एक बार बैंक सब जगह शेयर कर देना. Okay. If porosity is equal to 0.2, what is void ratio? N upon 1 minus n. 0.2 upon 1 minus 0.2. So 0.2 by 0.8. E is equal to 1 by 4. That is 0.25 value. That is 0.25 value. ओके. इसको भी होमवर्क लो. बहुत जो क्वेश्चन थोड़े मैं करा चुका हूँ कई बार, उसको होमवर्क दे रहा हूँ. चलो ये वाला बताओ. Which of the stations are affected? Good, Anwar. Which of the stations are affected by local attraction? Which of the stations may be affected by local attraction? Guys, see, the difference of C and D is 180 degree. Although I many times told you that even if the difference is 180 degree, it doesn't mean that local attraction is 0. Might be the local attraction at both the stations are in same in magnitude and same in direction. Same in magnitude and same in direction. If the local attraction at C and D is there, and that local attraction is same at C and D, same in magnitude, same in direction, then also difference will come 180 degree. But in high surveying, we assume that if the difference comes 180 degree, we assume that there is no local attraction. Even if there is a different local attraction, then also difference can come 180 degree. If someone has done so precisely observation error, the difference is coming 180. Okay. So this is assumed to be free from local attraction. So what are the stations which will be affected? A and B. Do this. Do this, please. Isogenic line is line joining the points of equal declination. Agonic line is the line joining the zero declination. Level line is joining the equal elevation, and contour line is parallel to earth surface because same elevation. Parallel to earth surface will be same elevation, whatever the answer is coming. True meridian is joining the geographical poles. It is always fixed but difficult to find out. Astronomical observations are required. You can roughly tell that that is north, but exact this is north, this is north, this is north, this is north, you cannot tell. Astronomical observations are required. So it is fixed, okay, but difficult to find out. Guys, a magnetic bearing is 1480 when declination was 30 degree east. Sir, how is this possible? So much big magnetic bearing. If today's declination is 80 degree west, what is the magnetic bearing right now? Sir, so much huge magnetic bearing. How, sir? How, sir? Guys, suppose this is 90 degree bearing. So same can be written as 90 and then 360 more. So same can be written as 450 also. Then same can be written as 450 plus 360 also. Same can be written as 450 plus 360 plus 180 also. Okay. So guys, when the declination was 30 degree east from true meridian, it was earlier 30 degree east. Okay, now it is 80 degree west. So 30 and 80. So earlier you are measuring any line you are measuring from here.
but now you are measuring 110 degree more because this has shifted to here. So 110 degree more value will be coming. 1480 plus 110 for 1590. Understood? Understood, friends? Please tell me. Everyone? Any doubt to anyone? No doubt. A bubble tube with division of 2 mm and radius, this sensitivity is. So sensitivity in seconds is given by 206,265 into D. D is 2 into 10 ki power minus 3 upon radius 10. Whatever the value you are getting, that will be the answer. Curvature correction is differential derivative is always subtractive, minus 0.0783 d square. Which of the following is false? Which of the following statement is false? चलो (33) you are saying C. False बता देना. Plumb line is in direction of gravity, correct. Mean sea level can be used as this is false. Guys, mean sea level is in the shape of earth na. Mean sea level is in the shape of earth because it is over earth. So yes, it can be a simplification of geoid. Geoid will be like a mean sea level because sea is above earth, so shape will be same, and it all points on geoid is having equal gravity. But this is not, mean sea level is not horizontal. So how we can I take a reference for horizontal points? So B will be the answer. Yes, man. Jagrati, good. Okay. Now which of the following statement are false? Surveying is the art of determining relative position of different features. Correct. First step of execution of any engineering. Correct. In the absence of accurate maps, it is difficult to lay out the alignment. Correct. The primary objective of surveying is to know the cost. No. Objective may be indirectly to know the cost, but primary objective is not this. Primary objective is not to know the cost. Primary objective is to know the layout, to make a map, to make a plan, to know the relative positions of various points. That can be objective, but indirect objective. Okay? Everyone please tell me. 35. I am asking, what is parallactic angle? Parallactic angle for analytic lens. The value I want the value of that parallactic angle for analytic lens. Tell me, guys. This is a tachyometer. Line is like this. Line is like this. Line is 3 wires are there na. 3 in diaphragm, in tachyometer there are 3 wires na. So from 3 wires the 3 readings in the staff are like this. So this is total is S. So this is S by 2.
parallactic angle is this total alpha. Parallactic angle is this alpha. So this alpha by 2. This is D. So tan alpha by 2 in this triangle is perpendicular S by 2 in base is D. Perpendicular S by 2 and base is D. So what is S? Oh sorry. So this is S by 2 into D is Ks plus C. K is 100. For analytic lens K is 100 and C is 0. So 1 by 200. Tan alpha by 2 is 1 by 200. So alpha is, you can check, 0 degree 34 minutes and 22.63 seconds. You can check it. 0 degree 24 minutes and 22.63 seconds. Are you getting the same value? Are you getting the same value? Yes or no? Okay. What is stopping side distance? It is the braking distance plus the distance traveled during the perception reaction time. Okay, lag distance plus braking distance. Lag distance plus braking distance. Tell me this please. Guys, this is a linear relationship between V and K. So linear relationship, so Q max is equal to Vf into Kj by 4. Vf into Kj by 4 because relation between this is linear. Now guys, Kj is, in jam condition the spacing is 7. In jam condition the spacing is 7. So Kj is 1000 by 7. What is Vf? Vf value is given. The free mean speed is given as 70. So from here you can get the value. From here you can get the value. Got it? Everyone? Please tell me. Please tell me. Okay. Now guys, which of these phases are not possible? See P, what is happening? 1 and 4. So 1 and 4 can go in one go. It's no collision. 2 and 5. So 2 is going like this, 5 is going like this. It's absolutely fine. 3 and 6. 3 is going here. This is 3. And 6 is going here, is fine. Now Q, 1 and 2 both can go together. Then 4 and 5, yes, can go together. 3 and 6, yes, can go together. 2 and 5. So 2 and 5 can go. 2 will go here, 5 can go here. 1 and 3. Okay, 1 and 3 will be a huge collision, guys. 1 and 3 will be huge collision. So this is not possible. R is not possible. R is not possible, guys. Everyone tell me, have you understood? Okay. Now guys, when subjected to bending moment m, the total strain energy is integration of m square dx upon 2i for the whole structure, for the whole beam or frame or whatever. Okay, for the whole beam or frame, whatever. It is the total. Got it? Okay, what is the size of modular brick? The size of modular brick is 19 centimeter into 9 centimeter into 9 centimeter. King closures are related to, king closure is related to, बता दो यार, बता दो यार, जल्दी से. किंग क्लोजर्स किससे रिलेटेड होता है? ब्रिक का अरेंजमेंट है ना, ब्रिक का अरेंजमेंट है ना भाई.
brick arrangement. Water absorption of class 1 brick after 24 hours immersion in water should not be more than 20% of the sulfate. 20% से ज़्यादा आपका class 1 का brick should not be absorbing water. Okay. Chain survey is suitable when? Chain survey is suitable when? बताओगे? So guys, the ground is filled. Yes, when it is leveled, then chain surveying is or tape is fine. When it is undulated or there is vegetation, then we have to do tachymetry. For leveled, chaining or taping is fine. Area is small. Yes, we can measure. Okay. Plants are required on a large scale. Okay. Yes, large scale means small area. Guys, for India map, you have to make the scale like this, 1/10 lakh, like this. But for this room, you can make a large scale, 1/100 for this room. 1/100 room will fit in paper. So large scale means small area. In small area, chain surveying can be done. So all options are correct. All options are correct. Any doubt? Okay. The total number of links in a Gunter chain is? What are the total number of links in a Gunter chain? In a Gunter chain, the total number of links are 100. Okay. For a pipe half full, what is hydraulic depth? Guys, hydraulic depth they are asking, not hydraulic radius. Hydraulic depth they are asking. Hydraulic depth they are asking, guys. What is hydraulic depth? A by T. Hydraulic mean depth is hydraulic radius. Hydraulic mean depth is hydraulic radius. Hydraulic mean depth is hydraulic radius. Okay, but they are asking here only hydraulic depth, that is A by T. Tell me the value. Tell me the value. A is how much? Pi r square by top width is 2r. So it is pi r by 2. कुछ नहीं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 ना, पाई आर बाय 4. Any doubt to anyone? Any doubt to any champion? Okay. Tell me this. क्या लिख रहे हैं जुबैर? No sir, hydraulic mean depth is also A by T. Hydraulic mean depth, Zubair Hussain, is hydraulic radius. Okay, you can check it. Okay, the discharge of what is YC? YC is Q square by G की power 1/3 ना. 1 in a rectangular channel of 1 meter wide. So 1 capital Q, small q is capital Q by B. Okay, square की power 9.81 की power 1/3. This is YC. Now calculate YN. Now calculate YN. अच्छा, YN is 20 centimeter. YN is given is 20 centimeter. Now if YC is greater than YN, sorry, YN is greater than YC, it is mild slope. If YC and YN both are same, it is critical slope. And if YC is less than YN, it is steep slope. So you can check the values. You can check the values. Okay? Any doubt? Zubair, you can send me the screenshot if any. Okay, 48. Take it homework, guys. Which of the following represents a line joining the points of equal dip? Guys, see, equal elevation
is contour. Equal rainfall is iso height. Equal velocity is isowells. Equal evapotranspiration is isopleth. Time from where equal time to reach channel outlet is isochrone. Equal magnetic declination is isogenic line. Equal declination but that equal is zero declination is agonic line. Okay. Equal pressure is isobars. No need to write down. You can YouTube, you can rewind and write down again. Okay. Equal dip is where dip, the angle between the needle and the horizontal is dip. At equators the dip is 0, at poles the dip is 90. So equal dip is isoclinic. Equal dip is isoclinic. Latitude and departure are calculated. Latitude and departure are calculated. What they are finding? What will be the length? What will be the length? So length is, see, latitude is 1.5, this value, and departure is 0.5 minus. So length is 1.5 square plus 0.5 square. Okay. So what is this value coming? 2.25 plus 0.25. 2.25 plus 2.5. No need of calculator also. Okay, so 15 questions we have done, and now Richa ma'am will be coming, guys. You can join my telegram group Civil by Abhinav sir, and that is the workshop, guys. This workshop is on 20th of March at 7:30 p.m. 20 March 7:30 p.m. I am coming on app. Okay, where I'll be telling you the journey of an average student to a gate topper. Journey of an average student to gate topper. Okay, now Richa ma'am will be coming for the next 51 to 100 question. Okay, Richa ma'am will be coming for question number 51 to question number 100. Okay guys, thank you all. Wish you all the best, guys. Wish you all the best for BARC exam. Okay, जुबैर यार रिजल्ट से जस्ट पहले आती है, रिजल्ट से जस्ट पहले आती है. Okay, so ma'am will be coming now. Thank you all. Hello everyone, welcome to BYJU'S exam prep again. So guys, we'll be completing the remaining 50 questions quickly. Let's try to complete it in 1 hour. And good morning everyone. Good morning Anwar after a long time. Good morning Zubair, Jagriti. Okay, don't know about me, can go through my profile, join my telegram group for further upcoming classes. And guys, here is the schedule for the foundation course. Right now strength of materials is going on, after which I'll be taking environment for you guys. And guys, we have launched foundation course as I told you. So if you haven't subscribed our channel, kindly do so. And there's a workshop on 20th of March at 7:30 p.m. If you guys are an average student, so how can you be a topper? The whole journey of it and the 7 golden rules for it. And we are having a scholarship test on 14th of April. Flexibility of timing is there from 9 a.m. in the morning to 9 p.m. in the evening. You guys can give the test. And we are having ground zero series. If you're targeting for GATE 2025, right from the scratch, we'll be dealing the questions. And you can download the BYJU'S exam prep app also. Link is in the description from where you can download it. And guys, this is the sessions which I'm taking it in the app. So I'll be covering 2 chapters of irrigation. This is free of cost for the app free class. Okay. Good morning, kind-hearted ma'am. Thank you. ये पहली बार किसी ने ऐसी टर्मिनोलॉजी एडजेक्टिव यूज किया है. ओके, लंच तक खत्म हो जाएगा. लंच कितने बजे करते हो? 2 बजे करते हो, 1 बजे करते हो? तो 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा. 1 बजे भी नहीं. लेट्स टेक अ टारगेट की 12:15. ओके, एंड लास्ट फुल सिलेबस कोर्स फॉर 25 and 26 बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हैज बीन basically we have launched it. So if you have any doubts, you have an option of this number. You can call on this number or you can fill the counseling form available in the description box.
Now this is the first question. I haven't given options so that you don't do तुक्काबाजी here. 1 बजे से तो पहले खत्म हो जाएगा. चलिए. Okay. Here a post-tension pre-stress concrete member is given to you. Pre-stressing force is 1600 kilonewton and stress in the cable is 1580 newton per mm square. It is asking you the summation of shrinkage, relaxation of steel and anchorage slip. Chaliye. Guys, you need to increase your speed. Because see, 1 hour you completed 50 questions, now 1 hour, and I have kept the questions which are lengthy because in the examinations you will get this type of questions. But some questions I have kept short also. This is the formula. What is given to you? Time is given to you 28 days. Come on. Lucky, Anwar, Jagriti, everybody. Acha, Abhay nahi aaya kya? Acha, Abhay is there. Acha, I forgot Abhay. I thought that he was telling na ki ma'am 11 AM kar do. 28 plus 2. Come on. Loss due to shrinkage is coming how much? 27. Now, relaxation of steel. %3 of initial stress. Here I am writing like this for you guys, but in the examination, don't write it like this and do it. 3% of initial pre-stress is 1580. 47.4. Correct, Jagriti. Last one is what? Loss due to shrinkage. नहीं, shrinkage तो कर दिया मैंने. और कौन सा बच गया? Shrinkage, anchorage slip. Change in length upon length into ES. चलिए. मयंक अभी आ गया. अरे उस दिन से मयंक ने मयंक तुम अभी 2-3 क्लासेस नहीं आए थे तो मैं बाइकआउट कर देंगे. ओके. 3 mm and this one is 8.5 meter. तो मीटर को कन्वर्ट करो mm में. इतने दिन क्यों नहीं आए मयंक? Where were you busy? Yes. Come on. How much it is coming? Come on, waiting for your answers. Total answer बताओ. इसका आंसर बताओ ना. 70.58 Newton per mm square. It is asking the summation of all these three. So the summation will be how much? 27 plus 47.4 plus 70.58. What is the answer? 144.98. Good. Jagriti, keep up this speed. Okay. Answer. Cool. Chalo. So you will get such sort of questions. Or beams ke bhi, aap remember, if you see the gate BARC 23 papers and all, they have given the questions of beams also like this. So remember. Now this again a question of pre-stress. A pre-stressed rectangular beam is there whose size is 300 mm by 900 mm. Okay. And pre-stressing force is 700 kilonewton. Eccentricity is 350 mm. Stress at टॉप फाइबर एट मिड स्पैन सिर्फ प्री स्ट्रेस की वजह से x MP है. टेल द वैल्यू ऑफ x. So you do job. I was not knowing about it. Okay. Stress at the top fiber mid span. तो P by जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से कंप्रेशन लोड की वजह से माइनस PE y by I. तो y by I. तो I by y will become z. चलो. 700 kilonewton, that is 700 into 10 raised to power 3, 300 into 900, BD square by 6. Come on, solve it quickly. They can ask you, like, they will give you the value and they will say it is 10. Like, acha, pahले aap solve karo, then I'll tell you.
बिकॉज हियर पे सिर्फ बोला ड्यू टू प्री स्ट्रेस अलोन, इसलिए नहीं किया. क्लियर जुबेर? 3 पॉइंट. अरे पॉजिटिव आ रहा है. चलो, ए है बी है, दोनों में सेम लिखा है 3.456. नाउ कैन यू टेल मी वेदर इट विल बी टेंसाइल और वेदर इट विल बी कंप्रेसिव? कम ऑन, हु विल टेल मी? वैल्यू तो दोनों में सेम लिखी है, टेंसाइल और कंप्रेसिव. कम ऑन. चलिए, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्री स्ट्रेस, बट ये थोड़ा लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट पर है. नेगेटिव आया तो फिर कंप्रेशन होगा. मॉड दिया है. हाँ, यहाँ पर मॉड दिया है तो सिर्फ वैल्यू पूछी है. 3.456. मैंने 477 क्यों लिख दिया? 456. ठीक है. बट अगर मैंने वही बताने के लिए कि अनवर अभी तो सिर्फ मॉड है क्योंकि दिस इज योर एनएटी क्वेश्चन. बट इफ इट कम्स लाइक दिस तो फिर आपको साइन भी बताना पड़ेगा, टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है. दैट व्हाट आई वाज टेलिंग. Determine the eccentricity of a load balancing cable. Size is given to you. At the center में आपको eccentricity बताना है. Live load is given to you. Span is 9 meter and pre-stressing force is 1700 kilonewton. अब इसमें options है. Calculate the eccentricity. Load balancing cable. एक लाइन का आंसर इसमें, एक लाइन, just one line. मैंने तो आंसर बोला ही नहीं है अभी, मैं तो आपसे पूछा है. मैंने टेंसाइल भी मार्क किया, कंप्रेसिव भी मार्क किया. आप बताओगे मुझे और मैं लास्ट में बताऊंगी. आप बताओगे मेरे को. और ये माइनस आया था कि प्लस आया था? सॉल्व करने में माइनस आया था कि प्लस आया था जागृति? व्हेन यू सॉल्व्ड इट, इट वाज कमिंग माइनस और प्लस. वैल्यू पॉजिटिव आई थी कि नेगेटिव आई थी सॉल्व करने पे? रुको, मुझे खुद ही सॉल्व करने दो. कैलकुलेटर में बहुत लाइट डिस्प्ले होता है, पता नहीं क्या हो गया है. खराब हो गया है क्या? जब सोचती हूँ कि नया ले लूं तब ये चलने लगता है. ये तो मेरा तो कुछ और ही आ रहा है. अच्छा, 700 था यार. इसमें इतना लाइट है, दिख ही नहीं रहा है. नेगेटिव आया था पक्का? मेरे कैलकुलेटर नहीं दिख रहा यार अच्छे से आज. नेगेटिव आया था, ठीक है. अगर ये नेगेटिव आया था देन इट विल बी टेंसाइल, बिकॉज कंप्रेसिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर रिलेटिव टर्म्स. हमने पॉजिटिव लिया है कंप्रेशन को एंड नेगेटिव वी हैव टेकन फॉर टेंसाइल. तो इफ द वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव दैट मीन्स इट इज टेंसाइल. विदाउट मॉड है, टेंसाइल है. अगर नेगेटिव आ रहा है, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव मींस इट इज टेंसाइल. इफ इट वुड हैव कम पॉजिटिव इट वुड हैव बीन कंप्रेशन, बिकॉज प्रीसेस में जनरली हम कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं और टेंसाइल को नेगेटिव लेते हैं. क्लियर? अभी तो फिर सिर्फ मॉड एक्स पूछा इन दिस क्वेश्चन, सो द आंसर विल बी 3.456. ठीक, क्लियर हो गया जुबैर? कंप्रेसिव नहीं होगा मैम, कंप्रेशन ये सोम वाला नहीं है बेटा. यहाँ पे पॉजिटिव इज फॉर कंप्रेशन, नेगेटिव इज फॉर टेंशन. क्लियर एवरीवन? नाउ determine the eccentricity of a load balancing cable for a beam size 350 into 750 mm at center. Beam का live load दिया है, span 9 meters, simply supported. Come on, calculate the eccentricity. और जब क्लियर हो जाता है तो बताया भी तो करो यार. I'm not seeing your faces. लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में जब भी eccentricity they ask you, patent, this is the one. Okay, so now let's calculate load. 1700. Length is given to you as 9 meter. Substitute and tell me. 9 square.
बस W निकालना है इस क्वेश्चन में. W. देखो क्वेश्चन में लाइव लोड इट इज गिवन टू यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द लाइव लोड प्लस डेड लोड. अब डेड लोड कैलकुलेट करिए सर. 25 इंटू B इंटू D. बस साइंटिफिक कैलकुलेशन मैंने बहुत खराब कर दिया. बात तो सही है, खराब तो कर दिया. अब तो 9+8 करने में भी सोचना पड़ता वाली बात हो गई है. कम ऑन कैलकुलेट W. पहले W निकालो. किलो न्यूटन पर मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा. कैलकुलेट बताओ. पहले आएगा mm में. कन्वर्ट दैट mm में. पहले फर्स्ट इट विल कम इन मीटर्स. कन्वर्ट दैट मीटर्स इनटू mm. यू विल गेट 9.86. करेक्ट करेक्ट लकी. करेक्ट जागृति. गुड. 54th क्वेश्चन. हियर अभी इरिगेशन का क्वेश्चन आ गया. हियर यू हैव बीन गिवन अ weir floor. Okay, 3 sheet pile walls is given to you. You have to calculate the ratio of creep length from Lane's theory to that from the Bleek's theory. Ab those who know the concept, they will be only able to answer this. Bleek ne bola whether it is horizontal creep or whether it is vertical creep, the weightage will be 1 only. So pehle pani will go like this. So 2 times 10. Then it will go like this plus 8. Then it will go like this. 2 times 8. 8 ऐसे गया, फिर 8 ऐसे गया. So that's why 2 times 8. Then 12 plus 2 times 12. Solve it and tell me how much it is coming for Bleak. You can take 2 common and add 10 plus 8 plus 12. कितना आ रहा है? Solve it. 80 mm it will come. Lane has given weightage. Weightage कितना दिया उसने? Horizontal it has given some weightage and vertical it has given some weightage. Can you tell me what is the weightage factor? Horizontal को वैसे ही रखा कि vertical को वैसे ही रखा? Vertical को वैसे ही रखा, kept vertical as it is but given a weightage of 1/3 to the horizontal one. So vertical was 2 into 10 plus 8 plus 12. इसको वैसे ही रखा और जो horizontal है 8 मीटर, इसको weightage दिया 1/3. The horizontal it has given the weightage of 1/3. Very good Abhay, very good, too good. ये कितना आएगा? 66.6667 ऐसे. So the ratio, how much it is coming? 0.833. Correct. Remember, Lane has given a weightage of 1/3 to the horizontal creep and given a weightage factor of 1 for vertical creep. वही logic लगाया बस. Nothing. पानी ऐसे, according to them this will flow like this. So I have done that only. Clear? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज अ मींस इफ दिस क्वेश्चन कम्स, मैं तो पहले बोलूंगी छोड़ देना, मतलब इफ इन द एंड यू विल गेट टाइम देन ओनली डू इट, अदरवाइज लीव इट. बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अगर पेपर ही पूरा ऐसा आ गया, मतलब एक भी इजी क्वेश्चन इट इज नॉट कमिंग, टफ क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो फिर तो करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में. लेट्स चेक इट आउट. अब इस क्वेश्चन को करने में देखना अभी 11:16 हो रहा है. हाउ मच टाइम इट विल टेक? An average rainfall of 16 centimeter occurs over a period of 12 hours. Unit hydrogram 1 centimeter. Unit duration 6 hours. It rises linearly from 0 to 30 Q max 6 hours and then 0 in 12 hours. अब पहले तो एक मिस्टेक, यहाँ पे 6 आवर्स होगा कि 12 आवर्स होगा? 12 आवर्स होगा. Linearly to 0 in 12 hours. एक गलती. How much it is coming?
हाँ हाँ वही तो बता रही हूँ, 30 क्यूमैक इसीलिए तो लिया है। ठीक, अब फाइंड इंडेक्स ऑफ द कैचमेंट इज गिवन टू यू 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, पीक डिस्चार्ज पूछ रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू गाइस, चलो अटेम्प्ट कैसे करना वो बता दो, याद है अगर तो, इफ यू रिमेम्बर देन टेल मी, कैसे करेंगे ये बता दो। थर्ड आवर, 6th आवर, 9 आवर, एरिया ठीक है 1 सेंटीमीटर 6 आवर्स, ठीक, एरिया निकाल लोगे, ठीक है, एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी, एन की तो पता ही है मुझे, एन ऑलरेडी मुझे पता है, पर अब एन तो मुझे पता 1 सेंटीमीटर है, डिस्चार्ज ऑल्सो आई नो 30 क्यू मैक्स है, टाइम ऑल्सो आई नो, कैसे करोगे सॉल्व, यहाँ तो पीक दी हुई है 30 क्यू मैक, बताओ, ये देखो 0.5 से एन तो मैं अभी निकाल लूंगी, 16 सेंटीमीटर बारिश हुई, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर इज द इनफिल्ट्रेशन फॉर 12 आवर्स, यहां से तो ये 10 सेंटीमीटर एन आ गया, अब एन निकाल लिया, तो अब बोलो 30 इंटू 10 कर दूंगी, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करना है, क्विक, कम ऑन, अब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी, कोई नहीं बता पा रहा है, 16 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, पीरियड ऑफ 12 आवर्स, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इज गिवन टू यू, अब एक चीज आप देख सको भाई, ये जो हाइड्रोग्राफ है this is for 1 centimeter 6 hours and it is asking for 12 hours, अब ये भी तो देखो, it is asking for 12 hours, so first you need to calculate the ordinates, आपको similar triangles, very good Zubair said it, आपको पहले यहाँ पे similar triangles से 3 hours 6 hours 9 hours, every hour you need to calculate the ordinates, क्योंकि here I'll solve it, हाँ या तो lag करके कर लो or you can use the method of S curve, so first you will calculate the ordinates, calculate कर लो ordinates, calculate the ordinates, come on, थर्ड आवर, 9th आवर्स, एवरी आवर कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पे अगर 30 है, यहाँ पर आप सिमिलर ट्राइंगल्स लगाओ, यू विल गेट 15, हियर यू विल गेट 22.5, हियर यू विल गेट 15, फिर यहाँ पे मिलेगा 7.5, okay, so every hours you can calculate using similar triangles, now I am doing it by S curve, आप you can do by any other method also, मतलब method of superposition also you can apply, that's up to you, ठीक है, अब मैं टाइम यहाँ पे ले रही हूँ 0 3 6 9 12 15, अब यहाँ पे जो ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स यहाँ पे था ये 0, देन इट इज 15, 15 ही था ना, हाँ 15, देन 30, देन 22.5, 15, 7.5, 0, ओके, दिस इज द ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर्स, अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको एस कर्व से भी कर सकते हो और यू कैन डू इट बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, आई गेस मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एवरीबॉडी नोज, तो मैं एक काम करती हूँ, उसको एस कर्व से करती हूँ, ऑर्डिनेट्स जो दिया उसी का बनाना है, 6 आवर्स का एस कर्व, दिस विल बी 0 15 0 15 30, 22.5 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 5 प्लस 15 37.5, 30 37.5, this 45, this is 45, this is SA,
अब इसको लैग कर दो बाय गुड मॉर्निंग। अब इसको लैग कर दिया 12 घंटे के हिसाब से, तो 1 3 3 6 9 12। नाउ आई ऐड ऑल दीस वापस SB. So now ordinates of 12-hour unit hydrograph will become how much? SA minus SB into the duration which is given to you is how much? 6 hours. The duration which is asked is 12 hours. 0 minus 5 15 minus यहाँ से कम ही कम निकल कर आएगा. Just check it out. In which you will get more. 45 minus 0 into 6 by 12. That is 22.5 meter cube per second. This one. तो एक बार ही आ गया, बस खत्म. Now the answer is done. 22.5 meter cube per second. This is peak of unit hydrograph into 10. So this will, 10 is the rainfall axis. This will give you 225 meter cube per second. Clear? This will be your answer. Guys, in this question, it is asking you peak discharge resulting from direct runoff hydrograph. Now, so what will be the answer? Whether it will be 2 to 5 or plus 5. In this question, ये direct runoff hydrograph की बात कर रहा है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. If in the question they have asked you just peak discharge and they are given you base flow, तब तो वो flood hydrograph की बात कर रहा है. अभी peak discharge resulting from direct runoff hydrograph की बात कर रहा है. So answer will be 225 और उसमें base flow add करूं. Base flow plus 30 क्यों करूंगी? 30 क्यों करूंगी मैं? 30 कहां से आया हुआ है? चलो. Now this question. अब थोड़े इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत लंबे लंबे कर लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ. किसी ने बताया नहीं इसका. पीक डिस्चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. यहाँ पे मुझे बेस फ्लो दिया हुआ है भाई, तो मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा. मैं पूछ रही हूँ. एग्जाम में तो मैं नहीं रहूंगी ना. चलो. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड for removal of. This is famous question in all the thermal power plants and all. You get electrostatic precipitators. Very good, Jagriti. It is used for the removal of particulate matters, or here you will call it as particulate contaminants only. Okay. Next question. Now this one. The temporal mean velocity gradient, that means G is given to you 300 second inverse. Kinematic viscosity is given 1.3 into 10 raised to power minus 6 meter square per second. Volume, it is asking you if the power consumption is 1 kilo. Come on. So power is G square mu V. यहाँ पे बस एक ही गलती कर सकते हो. First convert kilowatt into watt. ठीक है. Temporal mean velocity gradient. Now mu dynamic viscosity is not given to you. Nu is mu by rho. So mu will be nu into rho. Now, rho will be 10 raised to power 3. Now, calculate the volume. How much is the volume coming? Jagriti, Abhay, Lucky, everybody, Vamsi. How much is the volume coming? .47547. That is 8.48 upon 4. So, RCC. भर भर के आने वाला structures, remember that. A short column is there whose cross section is 460 into 600 mm. Column is meeting general requirements. दे रखा है. 10 bars are there of 20 mm dia is provided as main bars. It is asking you ultimate load carrying capacity of the column. Ultimate load carrying capacity means PU. Come on. 0.4025. Only you have to do what? You have to calculate AC and ASC. Area of steel and compression. चलिए फटाफट से solve कर दीजिए. You will get the answer.
Come on, quick. And tell me also, what is AC and what is ASC? Chalo. Quick. अनवर इसको सॉल्व कर लो, फिर बैक क्वेश्चन में जाके बताती हूँ. 1 मिनट इसको सॉल्व कर लो पहले. ग्रॉस एरिया 460 into 600. Area of steel in compression 10 bars of 20 mm dia. Okay, so AC will be AG minus ASC. चलो सॉल्व करके पहले मुझे इसको बता दो आंसर. How much is AC coming? एक सेकंड I'll add some. कितना AC AC ASC निकाला, AC पूछा मैंने. मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. 276123 minus 3141.59. So this will become 272858.41. How much it is coming in kilonewton? Kilonewton में फाइनेंस आंसर बता दो. 3600 kilonewton. हाँ 362 approximately correct. Correct. 3602. 3602 kilonewton. Correct. चलो. Next question. This you have to tell me the incorrect option. Read it and tell me the incorrect option quickly. Correct. ये PQ region, it denotes the compression region, while in the third part they have written in this interaction diagram, they have mentioned that PQ is represents the tensile failure, which is wrong. So the one which is wrong is correct for us. Clear. Question number 60. The effective span of a cantilever slab of continuous at the end of a continuous slab. ये W. This is L0. Ab here you will make mistake, I know it. Come on, solve it. D. Very good. L0 plus W by 2. अगर इसकी जगह सिर्फ ये कैंटिलीवर स्लैब होता like this, L0 and D, then how much it would have been? L0 plus D by 2. But since it has asked you continuous slab, it is length up to the face of support.
plus half of the effective width. Correct. This one, environment. Now answer this question, read it properly and answer it. Consider the following statements with respect to aerobic and anaerobic sewage treatment process. Come on, guys. Correct answer. Biomass production in the aerobic treatment process is less. गलत. ज़्यादा होता है. Wrong. Energy consumption and production are more. I have taught you this. Consumption aerobic में ज्यादा होता है, production कम होता है. इसमें दोनों चीजों को एड अप कर दिया है. कंजम्पशन प्रोडक्शन की बात कर रही है, तो प्रोडक्शन इज लेस. Anaerobic you get acids, alcohols, gases. In aerobic you don't get it. So production is less. So this is also wrong. Startup period is less in the aerobic treatment process. Yes. कम time में ज़्यादा काम हो जाता है. So only S3. Correct. Now this one. RCC beam is there. Okay. Width is given to you, depth is given to you, effective cover is given to you, bending moment, shear force, torsional moment is given to you. It is asking you the design bending moment. अच्छा question है ये. I'll give you the options also, but first solve it. I'll give you the option also. Solve कर लो. Come on. पहले मुझे निकालना पड़ेगा. First I have to check it out. What I have to check it out? Whether tau v, the shear force which is coming, it is less than the critical one or whether it is more. Okay. So चलो पहले tau v निकालना है. Tau v के लिए पहले VUE निकालना है, equivalent shear force. So equivalent shear force, since here torsion is also shown to you, this will come how much? VU plus 1.6 TU by B. Calculate. shear force equivalent आ गया 76.15 kilonewton converted into Newton. B into D. Now 480 mm it is written. कितना आ रहा है? 61 का A भी, अच्छा 62 का A बोल रहे हो. ये कितना आ रहा है पहले टाउ भी बताओ ना. हालांकि इफेक्टिव डेप्थ की जगह मैंने 480 ले लिया है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे. हाउ मच इट इज कमिंग? 0.458. अब देखो टाउ वीई इज लेस देन टाउ सी, तो हमें डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है. द फ्लेक्सुरल मूवमेंट विच इज कमिंग इट इज ओनली ओके. करेक्ट. 0.488 है. ओके 0.488. So the flexure movement which is coming that is only okay. 175 kilonewton meter. हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है. Clear? It was that simple. Clear. Identify the correct statement. Come on, guys. Come on. नेवल पोस्ट के टॉप पे जो डेकोरेटिव कैप होता है उसको आप फाइनल बोलते हो. क्या ये सही है? करेक्ट.
The horizontal portion between each thread is called the going. नहीं, the horizontal portion between each thread उसको क्या बोलते हो? Come on, 63 का C, both are correct. Going to horizontal मैं लिख देती हूँ. First I'll write it also for you guys. Going is the horizontal projection of the flight. Thread का नहीं होता. तो this is wrong. तो यहाँ पर ये wrong हो जाएगा. सिर्फ statement 1 is correct. So wrong guys. Nobody told the correct answer. आ जाएगा क्वेश्चन, लूज कर लोगे मार्क्स. चलो, पिक अप द इनकरेक्ट ऑप्शंस अमंग द फॉलोइंग. इनकरेक्ट, कम ऑन गाइस. इनकरेक्ट बता दो. फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट एफसी के करके देख लो. 3.83 इट इज कमिंग करेक्ट. कंक्रीट 1.5, स्टील 1.15. दिस इज द सेफ्टी फैक्टर करेक्ट. Principle of superposition is valid when the geometry of the structure doesn't change. That is also correct. Minimum grade of plain concrete to be used. Very good Zubair. This is the one which is the correct option. This will be M20. ठीक है, चलो. 65. As per IS 456-2000, design method for torsion is based on. Correct. Skew bending theory. Now this one. When bent bars are provided, their contribution towards shear reinforcement shall not be more than dash the total shear to be resisted. कौन से वाले का नो आइडिया बोल रहे हो? करेक्ट जुबैर, करेक्ट अबे. दैट इज 50%. उससे ज्यादा नहीं रेजिस्ट कर सकते बेंट अप बार्स. करेक्ट. नाउ दिस वन. हाँ, a big question and a good one. A 3-hinged parabolic arch is given to you. Span is 20 meters. Carrying a concentrated load 4 meters from the left, and the load is 150 kilonewton. You have to calculate the vertical reaction at A. चलो, कैलकुलेटर की बारी आ गई, कैलकुलेटर की बारी आ गई भाई, कैलकुलेटर की बारी आ गई. चलो, you have to calculate VA. सिर्फ VA कैलकुलेट करना और HA कैलकुलेट करना. HA HP वही सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वही सब लगा दो. VA प्लस VB is 150. This is one equation. Second equation, आप दोनों साइड horizontal thrust will be same. H only. Take the moment about C. Moment ले लो, या C के about ले लो, या B के about ले लो. Anything you can do it. Moment about B ले लेती हूँ. मुझे लग रहा है मैं ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मेरा ही पेपर है. VA इंटू 20, ठीक है, माइनस 150 इंटू 20 माइनस 460 इज इक्वल टू 0. 120 kilonewton. अरे वाह, मुझे तो horizontal thrust I don't need to calculate only because I got VA 120 kilonewton. You guys are also getting this one. If in this case they would have asked VB, it would be 30 kilonewton. Okay. Now HA calculate करना. HA 67 का B कैसे आ गया यार? 120 आ रहा है. Just check it out. 120 आ रहा है.
Now if you want to calculate horizontal thrust, 0. Now VA that is 120 into, ये आपका राइज कितना दिया था 4 मीटर, दिस राइज इज 4 मीटर. देखो 120 into 10 माइनस 150 इंटू ये 10 है तो ये 6 मीटर हो जाएगा, इंटू 6 माइनस HA इंटू 4 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट. हाँ तो नहीं होंगे ना, तभी तो बोल रही हूँ, तुम सोच के भी मत जाना कि आपसे क्वेश्चंस पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हो पाएंगे. 100 क्वेश्चंस छोड़ो, 50-60 क्वेश्चंस भी कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है. इसीलिए तो जुबैर कट ऑफ पिछली बार कितना गया था बेटा, 102 गया था 300 में से. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, 102 गया था कट ऑफ. तो आएगा तो पेपर में छोटे छोटे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस देके आपको खुश कर दूं कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. पेपर में ऐसा होने नहीं वाला. तो मैं ये गलत भावना आपको नहीं देना चाहती. आई वांट टू टेल यू द ग्राउंड रियलिटी. नहीं सॉल्व कर पाओगे 70, आप 50 के ऊपर चले जाओ, सही सॉल्व कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है. चलिए 75 आप उठा के देख लो पेपर. चलिए नाउ दिस वन, I'll bring water, solve this quickly. आ गया. रॉन्ग. रिजिड प्लेन स्ट्रक्चर्स, अगर आप कोई भी रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स ले लो, जैसे ये यहाँ पे पिन लगा दो जॉइंट में, सो इट विल बी नंबर ऑफ, करेक्ट करेक्ट जुबेर, करेक्ट जागृति, नंबर ऑफ मेंबर्स एट द जॉइंट -1. अभी स्टील भी आएगा ना. अभी हम लोग 100 क्वेश्चंस तक कहाँ पहुंचे अनवर. चलिए लो, बहुत याद कर रहे थे, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द मिनिमम पिच फॉर अ M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6. अच्छा हाँ यार, एक मिनट, एक क्वेश्चन जो अनवर ने पूछा था मैं भूल ही गई. जस्ट अ मिनट. हाँ एक मिनट. इस क्वेश्चन में हाँ, ये जो पीक डिस्चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विल बी. अब मुझे बस एक चीज बताओ, पीक डिस्चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ यहाँ पे लिखा है, सो 225 विल बी द आंसर और 230 विल बी द आंसर. ये क्वेश्चन पूछा था ना अनवर ने, 225 और 230. पीक डिस्चार्ज रिजल्टिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से जो रिजल्ट हो रहा है, so 225 will be the answer और 230 will be the answer. अब यहाँ पे बेस फ्लो इज गिवन, बट इट इज आस्किंग यू पीक डिस्चार्ज और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से रिजल्ट कर रहा है. 225 करेक्ट. अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए पूछता तो ये होता. ठीक है अनवर, मैं स्किप हो गया था मेरे से, अब दोबारा रिमाइंड भी नहीं करा है मुझे. चलिए नाउ दिस वन, मिनिमम पिच फॉर अ M16 बोल्ट कितना हो जाएगा, 2.5 D. M16 2.5 into 16 कितना आ जाएगा, 40 mm. करेक्ट. अब सॉल्व करो. A steel rod of 20 mm diameter is used as a tie member subjected to possible reversal of stresses. What is the maximum permissible length of the member? चलिए जल्दी. A possible reversal of stresses due to wind load, it is asking you, so what will be lambda? Lambda will be 350. R effective length you have to calculate. R minimum if you don't know, that is I by A. अब ये स्टील रॉड क्या है, सर्कुलर है. कैलकुलेट L effective.
सीधे याद रख लेना R minimum is D/4, टाइम बच जाएगा. How much it is coming? Possible reversal of stresses due to wind load for that lambda 350. Solve करके बताओ how much it is coming. 1750. Correct. Question number 71. What is the section modulus required to design an angle purlin which experiences a maximum bending moment 10 kilonewton meter and it is made of F250 grade steel? अब इसमें तुम लोग फंसोगे. Come on, solve करो. Section modulus required पूछ रहा है. Bending moment तुम्हें पता है, permissible stress into Z. So section modulus, now bending moment is given 10 kilonewton meter mm. अब ये कोई मुझे बता सकता है permissible stress in bending, how much it will be guys? यही बताना मेन है भाई इस क्वेश्चन में. It is not given in the question, you need to know. How much? 1.33 into 0.66 Fy. Fy is given to you as 250. कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एंड ग्रेड ऑफ स्टील वाज गिवन. You have to calculate the permissible stress in bending, otherwise you won't be able to solve. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. कम ऑन, अनवर, जागृति, एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी. रनर बोलेंगे मैम स्ट्रक्चर एनालिसिस भी नहीं है. है भाई, स्ट्रक्चर एनालिसिस है. कम ऑन. m plus r minus 2j. You can do this, members. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 members. Reactions. 2 here, 2 here. 4. Joints. How many joints are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joints are there. How much it is coming? 72. It is coming C. Correct. पर स्ट्रक्चर्स आएगा बेटा. स्ट्रक्चर्स का नहीं पढ़ा है, गलत करेंगे. पर स्ट्रक्चर्स आएगा अच्छा खासा. नाउ डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी फॉर द गिवन बीम. You can go simply through the formulas here. 3j minus r. जॉइंट्स कितने हैं? एक यहाँ, एक यहाँ. 2 जॉइंट्स. रिएक्शंस. वर्टिकल इसके पास एक ही है, रोलर है. इसके पास 2. हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला नहीं ले रहे हैं, तो कितने हो गए? 3. अगर मैं ले लूं, चलो उसको एक लेके उसका ले लेती हूँ. हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल और ये मोमेंट भी है. 3 इधर और 1 इधर, 4. और क्योंकि इसका भी तो लिया ही है ना. चलो 3 2 6. 6 minus 4 2. करेक्ट. Environment. The concentration of nitrogen dioxide in an ambient atmosphere is found to be 30 ppb, parts per billion. You have to tell in microgram per meter cube. अब मुझे यहाँ पर आपको एक चीज समझानी है. I want to explain you one thing. That's why I've taken this question. Generally आपको पता है we take the concentration in ppm, multiply by the molecular weight into 1000 divided by the volume in liters per mole. Since in this question it is given you in parts per billion, if in the question it comes in parts per billion, that's it. Clear? Now, how much it is given? 30. Molecular weight is given to you 46. Volume you need to calculate because volume is not given to you in the question directly. But they have given you P by RT. Now you know that PV is equal to nRT. Now if you want to calculate volume, this will be RT by P. Or you can write it as 1 upon P by RT. So this will become 1 upon 41.6 mole per meter cube.
Now you know 1 meter cube is equal to 1000 liters. ये substitute करो, liters per mole. How much it is coming? Final answer 57.408. Correct. Absolutely correct. Abhay, good. This is the final answer. Correct. Chalo. Now this question, because वो मुझे P1, V1, T1 भी बताना है. Now this you have to report the SO2 concentration in milligram per meter cube. What is the standard temperature pressure condition? Temperature 273, pressure 760 mm, and volume 22.4. Temperature which is given is 27. So 273 plus 27. They have given 760 only, pressure is same, and volume you need to calculate. So what we will go through the one, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. यहाँ से पहले हम calculate करेंगे V2. चलो solve करो, substitute the values and solve and tell me how much it is coming. Quickly tell me how much is V2 coming. So hot it is there today. V2 बता रहे हो 24.615. Now you need to convert it into पहले तो microgram per meter cube. What is the concentration they have given to in ppm? 10. Molecular weight of sulfur dioxide. Sulfur is 32. This will become 64. And volume is 24.615. How much it is coming? ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो आता है, कैसे नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ना पड़ेगा क्या जुबैर? This you need to study. अच्छा मैं दे दूंगी बाकी, अब इसके बाद से क्वेश्चंस में ऑप्शन दे दूंगी. I'll give you the options after this question. My AC is not working, it's too hot. एक सेकंड, मेरा मोबाइल हैंग हो गया, 1 मिनट रुको. कितना आ रहा है? You'll get it in microgram per meter cube. माइक्रोग्राम में कितना आया बेटा? 26,000. Then you converted it into milligrams. माइक्रोग्राम में कितना आया? आंसर फर्स्ट टेल मी दैट ना. 26,000. ठीक है. Now this if I convert it into this one, it will become 10 raised to power minus 6. और ये तो हमारा आ गया grams per meter cube. 10 raised to power 3 कर दो. So this will be minus 6 minus 3, 26. Correct. Very good. Correct. चलो 76th question. लो ऑप्शन दे दिया, सॉल्व करो. I'll just be back.
Got the answer? Calculate 5-day BOD 20 degrees Celsius. If 5-day 30 degrees Celsius, it is given to you 100 mg per liter. First, you have to calculate BOD ultimate. BOD ultimate 1 minus KD 30 into T. Now, BOD ultimate will be 100, 1 minus 10 raised to power. Now, first you need to calculate what? K30. कैसे निकालोगे? Deoxygenation rate. आ गया किसी का? Anybody got it? No, आया. 1.047. 0.1 30 minus 20. K30 कितना आ रहा? How much is K value coming? How much is K coming? Per day. Substitute it here. 0.158. यहाँ से you will get the value of BOD ultimate. How much is BOD ultimate coming? 76 का A आ गया. 76 का A नहीं answer. Check it out. गलत है. Wrong. See, in this question it is base 10 given अब है. I doubt whether you have used in base E. Base E तो नहीं use कर लिया. Correct, Jagriti. Very good. It is 81.62. First tell me what is the value of BOD ultimate coming for you guys. 119.35. Okay. Now you need to calculate BOD 520 degrees Celsius. Nothing is given. That means consumed BOD only. अबे वही किया क्या? E use कर लिया. BOD ultimate 119.3. 1 minus 10 raised to power. K20 already it is given. And 5 days. 0.62. Got it? So this will be your answer. Now. लास्ट वाला नहीं किया. अल्टीमेट बीओडी नहीं निकाला कि डीऑक्सीजनेशन रेट. अच्छा 5 days बीओडी नहीं निकाला. ओके अल्टीमेट बीओडी आंसर बोल दिया. 5 days 20 डिग्री सेल्सियस पूछा बेटा. चलो now this question. A set of 4 rapid sand gravity filter bed is to be designed for a population of 1, 2, 3, 4, 5. 1 lakh population. Daily supply is 250 liters. तो कितना पानी चाहिए रोज? 250 liters per capita per day. This much is the water required. And in per hour, how much water is filtered? 5000 liter per hour per meter square. So discharge by velocity will give you area. One line you should be able to do this now. Okay, 1 day is equal to how many hours? 24 hours. Hours, liters will get answer. You will get the area in meter square. कितना आ रहा है? First tell me the area in meter square. 208.33. अब गलती मत करना. This is the total area. How many filters are there? 4. So area of one filter unit will be how much? 208.33 divided by 4. कितना आएगा? 208 52.08. Okay. Now you know length into width will be the total area. मतलब area of one filter unit. And length is given to you twice the width. Solve कर लो. कितना आ रहा है? Correct. Width will come out to be 5.1 meter and length will come out to be 10.2 meter. B is the correct answer. Correct Lucky. Correct अब है. चलो. Solve this. I'll give you the options. ये अच्छा क्वेश्चन है. पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, then I'll give you the options. Volume it is asking to you in this question. Come on. Solve this. Okay. It is asking you, a town is there, 30,000 population, sewage 120 liters per person is producing.
weight BOD which is coming is 250. 30% is removed in the primary sedimentation tank. So how much BOD is going? How much BOD is going into the trickling filter? How much BOD is going into the trickling filter? 250 mg per liter का 30% remove हो गया. So how much is going? 70% is going. So 250 into 0.70, that is 175 mg per liter is going. And how much is coming out? 30. So can you calculate the BOD efficiency? Yes. Influent minus effluent divided by influent into 100. How much it is coming? Efficiency कितनी निकल के आ रही है? 82.86%. Now you know this formula. 100. If you want the volume in meter cubes, just write 0.44. If you want the volume in hectometer, 0.0044. Okay. This will be U by F. Why? Because here recirculation ratio is given. So first you need to calculate recirculation factor. Calculate the value of F. F निकालो. Final answer. अच्छा वो बता रहे हो 1.89. Okay. Efficiency 82.86. 100. 1 plus 0.44. Volume तो था यहाँ पे 89. What is the organic loading rate in kg per day? Kg per day में organic loading rate you have to tell. Now how many people are there? 30,000 persons are there. One person 120 liters per day. And what is the BOD? 175 mg per liter. Now convert mg into kg. 10 raised to power minus 6 kg. So from here you will get how much BOD is entering into the trickling filter. kg per day. ये बता दो कितना आ रहा है? Tell me how much it is coming. 630. Correct, Jagrati. 630. So from here the volume will come out to be how much? From here when you will solve it, the volume will come out to be approximately 1507. A answer. Simple. Usthani formulas and slide concept. चलिए 79th question. अब थोड़े easy questions आ गए. लंबे questions, every type of questions we are dealing it. So it's not that one particular type of questions only we are doing it. Come on. The invert of the lower outgoing larger sieve is depressed, suitable so as to match the crown of the upper incoming and the smaller size sieves. Statement 2. It ensures that smaller sieve runs full by backwater effect. Come on. Quick. किसी का आंसर नहीं आ रहा. अब है जागृति एवरीबॉडी. Match the crowns of the smaller sieve runs full. Now, statement 2 color. यार हम चाहेंगे कि देखो क्या लिखा है. It ensures that smaller sieve runs full by backwater effect. Backwater effect के कारण full run करे. ये कब से हम तो चाहते हैं under the action of gravity run करे. अरे आपको पता ना क्राउन ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग सीवर्स को इसलिए किया जाता है, मैच किया जाता है लकी, बिकॉज अगर आगे वाला सीवर चोक हो जाएगा ना बड़ा वाला, तो फिर सीवर पीछे की तरफ जाने लगे. आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा होगा ना कि सीवर बैक फ्लो कर जाता है. ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो क्राउन होता है टॉप पोर्शन वो मैच नहीं किए जाते, इसलिए उसके बारे में ये बोल रहा है. तो इन्वर्ट जो टॉप पोर्शन है क्राउन है उसको मैच करते हैं ताकि जो है पानी है सीवर का पानी वो बैक फ्लो ना हो. इसलिए नहीं कि बैक फ्लो के कारण सीवर में पानी जाए. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अब ठीक से समझ आया लकी? चलिए आ गया स्टील. अनवर वाज मिसिंग स्टील, सो चलो फिर से स्टील आ गया. A mild steel flat plate subjected to a tensile force of 84 tons. अब यहाँ पर क्या है, आपको shear force सब कुछ दे रखा है. आपसे पूछा है how many rivets are required. How many rivets are required? Calculate.
कितने रिवेट्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड सच क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये नहीं कि मैं टाइम पास के लिए करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आएंगे भी। कम ऑन। shear स्ट्रेंथ कितना दिया है? 5000 kg। क्रशिंग स्ट्रेंथ दिया है, सब कुछ दिया है। टू क्रश द रिवेट मतलब बियरिंग दे रखा है 8000 kg। टीयर करने के लिए 6000 kg। कैसे निकालोगे? गेट में नहीं है ना, हम तो कर, अगर आ गया तो 84 टन्स। 1 टन्स इज इक्वल टू हाउ मच केजी? 1000। क्विंटल्स होता तो 100। कैलकुलेट। आरवी रिवेट वैल्यू मिनिमम ऑफ shear एंड बियरिंग मतलब कितना होगा? 5000 kg। स्किप करोगे? ओके फिर ठीक है, स्किप कर देना, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फोर्स अपॉन आरवी 84,000, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 5000 सॉल्व इट। 84,000 डिवाइडेड बाय 5000, अब इतना तो कर सकते हो। 84 by 5 16.8, approximately 17. We'll round it off to the higher side. ठीक है, तो अगर ऐसे सिंपल आ गया तो मत करना। ओके, लास्ट 20 क्वेश्चंस गाइस। In a design of fillet welt, size of fillet for rounded toe of rolled section must not be more than dash the thickness of the toe. In the design of fillet welt. करेक्ट, वेरी गुड। अब है 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज डेटाबेस क्वेश्चन। चलिए, एक स्टील कॉलम है, व्हेन इट इज पिन्ड हिंज्ड एट बोथ द एंड्स, बकलिंग लोड इज 200 किलोन्यूटन। अगर आपने मिड हाइट पर लेटरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मिड हाइट पर, ठीक है, अभी हिंज था बट आपने लेटरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो बकलिंग लोड क्या होगा? यू हैव टू टेल दैट। तो बकलिंग लोड क्या होगा? यू हैव टू टेल दैट। चलो जल्दी बताओ। I'll give you the options. नहीं तो फिर अब बोलेंगे कि मैम ऑप्शन नहीं दिया। जस्ट डबल चेक कर लेते हैं। ओके, पिन्ड एट बोथ द एंड्स, तो कितना होता है? पाइस। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल ओनी। ठीक है, नाउ यहाँ पर रोटेशन एट मिड हाइट, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? इफ द कॉलम इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, क्या होगा? गलत, गलत, सब गलत बता रहे हो। The column is restrained against lateral movement and rotation. Effective length कितना होता है guys? ये तो याद रखना पड़ेगा, 0.8 times L. This is the one. Column is restrained against lateral movement and rotation at its mid height. 0.8 times L. Mid height पर हो रहा है, that is L by 2. इसकी value was given 200 kilonewton. Pi square EI upon 0.8 L by 2 whole square. पाई स्क्वायर EI by L स्क्वायर की जगह आप लिख लो 200 और बाकी 0.8 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। तो इसमें गलती कर दी आपने, नहीं 0.8 है, 0.8 है। सॉल्व। या तो उसको ऐसे भी कर लो, 200.4 स्क्वायर कितना आ रहा है? 1250। करेक्ट। तो ये याद रखना, कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एंड रोटेशन एट इट्स मिड हाइट। ये तो इफेक्टिव लेंथ हो गया, बट मिड हाइट बोला, सो इट विल बी L by 2. रिमेंबर दैट। ओके, 83. You have to tell the incorrect one.
इसमें करेक्ट बताना है आपको, मुझे इनकरेक्ट में तो सिर्फ एक ही लग रहा है. टेल मी द करेक्ट वन फर्स्ट. करेक्ट बताओ पहले. टेल द करेक्ट वन फर्स्ट. A is correct, C is correct. नहीं, वन करेक्ट नहीं हो सकता. वन कैसे करेक्ट हो सकता? द स्पेसिंग शैल बी सच दैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कॉम्पोनेंट शुड बी लेस देन 50. जरूरी थोड़ी ना, शैल नॉट बी लेस देन 50 और 0.7 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ मेंबर एज अ होल. बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन 50 लिखा है, 0.7 नहीं लिखा है. 0.7 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो नहीं लिखा है. यहाँ पे शुड बी लेस देन 40 और 0.7 टाइम्स. तो फर्स्ट तो पूरा सही नहीं हो रहा है. फर्स्ट पूरा सही नहीं हो रहा है. इसको भी एक मिनट. वन इज पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट, क्योंकि शुड नॉट बी लेस देन 50 और 0.7 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर एज अ होल. फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा. वही मैं, ऑप्शन डी तो गलत है क्योंकि वन पार्शियली मैच नहीं हो रहा है, तो सब में दिक्कत है. फिर ऑप्शन बी होगा ऐसे में, अगर इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी होगा. फिर ऑप्शन बी होगा फिर उसके हिसाब से. पर करेक्ट कैसे बोल दूं मैं इसको पूरा? मैं करेक्ट नहीं बोल सकती ना. चलो, आई सी टू दिस क्वेश्चन. अभी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो. आई सी टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 84. Cantilever beam is there, span is given to you, UDL is given to you, inclusive of self-weight. You have to calculate the bending and shear stress. Bending और shear stress निकालना है. Cantilever beam है, how much it will be? WL square by 2 and Z will be how much? यहाँ पर आपको IXX by Y. Just substitute the values. Substitute कर लो values को. लोड कितना दिया है? 20. 3 square by 2. IXX. IXX 1696.6. Y. Y क्या लोगे? What you will be taking Y? Y क्या लोगे? इसमें इसने ISL भी 200 तो दिया है ना. 200 by 2. चलो, कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस. एक निकाल लो, मेरे ख्याल से ऑप्शंस मैच नहीं करे तो एक निकाल लो, आंसर आ जाएगा. आई मीन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बोथ बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस. सॉल्व. बाकी मेरा तो काम है निकालना, मैं तो निकाल के दूंगी. कितना आया? W20 into 3 by 2. बेंडिंग स्ट्रेस कितना आया? 530.47. शेयर स्ट्रेस निकाला? शेयर स्ट्रेस निकाला? नहीं निकाला. 5.4
थिकनेस ऑफ द वेब 200। मैंने लिख दिया, कैलकुलेट करके चेक कर लेना एक बार। चलो 85th, consider the following statements, you have to tell which of the following statements are incorrect। incorrect आपको बताना है। come on, एटी फिफ्थ का बी करेक्ट। द इलास्टिक स्ट्रेस इन, पहले तो इफेक्टिव लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द बाउंड्री कंडीशन, रॉन्ग, डिपेंड करता है। थर्ड स्टेटमेंट, द इलास्टिक स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो, सही है कि गलत? सी कैसे हो गया? इलास्टिक स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। अगर मैं लोड बाय एरिया करूं, आई गेट द स्ट्रेस। ये तो डिपेंड करता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एल बाय आर स्क्वायर, ये तो डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो पे। सो इट इज, हाउ कैन यू से दैट इट इज इंडिपेंडेंट? फॉल्स। चलिए अगेन स्टील, कनेक्शन इज गिवन टू यू 20 mm बोल्ट्स दिया हुआ है। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि अनवर, बिकॉज इन दिस इज देयर इन योर सिलेबस। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नेट एरिया एंड स्ट्रेंथ इज गिवन टू यू। आपको स्ट्रेंथ, कनेक्शन की स्ट्रेंथ बतानी है। You have to tell the strength of the connection. Come on. अगर इसका एक और था ना, क्या लिखा है? The ratio of effective length to its radius of gyration is called L by R is called slenderness ratio. ये सही है। ये second statement I haven't explained to you. The elastic critical stress increases with decrease in slenderness ratio. देखो inversely proportional है। So if slenderness ratio will decrease, FCC will increase. So that is correct. In case अगर आपको नहीं पता था तो I've told you that. चलिए, now solve this. This is the connection which is given to you. It is asking you to calculate the strength of the connection. Strength of the bolt निकालोगे, strength of the plate निकालोगे, दोनों में minimum होगा. That will be the strength of the connection. Simple. Solve it. चलो, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। First calculate strength of plate. 0.9 FU upon AN. FU कितना दिया आपको? 410. नेट एरिया इज गिवन टू यू 2। नेट एरिया मुझे तो यहाँ पर अभी प्लेट का चाहिए। पहले तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लूँ यहाँ पे, ये गामा एम बी 1.25। नेट एरिया हाउ विल यू कैलकुलेट गाइस? नेट एरिया कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द नेट एरिया? कम ऑन अनवर, एवरीबडी एल्स, नेट एरिया कैसे निकालोगे? 120 mm का तो आपको दे रखा 120 mm इंटू 10 mm की गजट प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको क्या करोगे? 20 mm का डाया है और 120 इंटू 10 mm की गजट प्लेट है, कैसे निकालूं? और मुझे यहाँ पर और कुछ दिया है क्या? कनेक्शन बोल्ट का 20 mm, 16 mm थिकनेस, कैसे निकालोगे? गलत, गलत, रॉन्ग। ए एंड बी, वो तो नेट एरिया ऑफ द बोल्ट दिया है 250 mm स्क्वायर, उसको मत छेड़ो, वो तो बोल्ट का दिया है। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दिया है 500 MPa, उसको नहीं छेड़ सकते।
अब ये 16 mm की थिकनेस है, 20 mm का डाई ऑफ बोल्ट है, तो मैं उसको 22 से माइनस कर दूं, 2 होल माइनस करके, करेक्ट वही कर रहा है, इनटू एरिया चाहिए ना, तो 10 mm की, करेक्ट। अब आ जाएगा, सॉल्व करो, 980 mm स्क्वायर। सॉल्व इट जागृति, अब है एवरीबॉडी, सॉल्व एंड टेल मी द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अरे यार इसमें तो बोल्ट सिंगल शेयर में भी निकालना पड़ेगा, बियरिंग में भी निकालना पड़ेगा। स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, रुको। बोल्ट सिंगल शेयर में भी निकालना पड़ेगा, बेयरिंग में भी निकालना पड़ेगा। एक ही करूंगी ना उस लाइन में, नहीं एक ही करूंगी। चेक करो हुसैन, होमवर्क करने दो। नहीं मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ये करूं, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शेयर में और फिर बेयरिंग में, तो तीनों में कैलकुलेट करोगे, फिर जो मिनिमम आएगा उससे सॉल्व करोगे। ए एन बी इंटू एफ यू बी रूट ओवर 3 गामा एम बी, और बियरिंग में 2.5 के बी डी टी एफ यू गामा एम बी। ये दोनों फॉर्मूले से निकालोगे, सिंगल शेयर, बेयरिंग और प्लेट, जो तीनों में मिनिमम आएगा उससे सॉल्व कर लेना। अच्छा आप 2 से माइनस करके देखो जुबैर, करके देखो आप कितना आ रहा है फाइनल आंसर, टेल मी। जो इन तीनों में मिनिमम आएगा दैट विल बी योर आंसर। तीनों को सॉल्व करो, आंसर विल बी ए। अब अनवर बोल रहे होमवर्क, तो चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना होमवर्क में। चलो 87, which of the following is true in reference to the plastic sections defined in IS 800 2007? IS 800 2007 प्लास्टिक सेक्शंस, कॉम्पैक्ट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। प्लास्टिक सेक्शंस के लिए क्या सही है? प्लास्टिक सेक्शंस प्लास्टिक hinges डेवलप कर सकते हैं एंड दे कैन डेवलप कोलैप्स मैकेनिज्म, सो ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसको फटाफट आंसर कर दो गाइस, फटाफट आंसर कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 88, आई मेड यू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर ऑल्सो। टेपर्ड फ्लॉक्यूलेशंस मतलब जैसे अगर पहले ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है, बाद में कम पावर रिक्वायर्ड है, सो यू आर वेरिंग द सप्लाई ऑफ पावर। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म ना देगी और वेरिंग द सप्लाई ऑफ पावर। So tapered flocculation is more effective than the conventional process. Conventional means uniformly you are supplying power. Reason, in tapered flocculation velocity gradient at the inlet is less. गलत, ज्यादा होता है. So A is true but R is not. Correct. Very good, Anwar. नहीं, Jagriti, very good. Okay. Now this one, 89. An appurtenance used to connect high level branch sewer to low level branch sewer is? हाई लेवल ब्रांच सीवर टू लो लेवल, आपको पता है ना, ज्यादा हाइट होती है तो वी प्रोवाइड व्हाट, ड्रॉप मैनहोल। करेक्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इफ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर से निकल के आती है एफडी एंड बाय रेनफॉल सिमुलेटर इट कम्स आउट टू बी एफएस, देन विच इज करेक्ट? अब मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम पीपल विल मेक मिस्टेक। देखा नहीं, अभी 90 का नहीं आया। Rainfall simulator, always remember from rainfall in simulator you will get lesser value of infiltration because it considers the impact of rainfall as well. So Fs is less than Fd हमेशा हमेशा।
कभी भी ज्यादा नहीं होगा जागृति, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज रेनफॉल सिमुलेटर आप एक प्लॉट लेते हो, यू अरेंज अ सीरीज ऑफ नोजल्स एंड डू दैट रेनफॉल सिमुलेटर वाला, सो इट कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ दैट यू गेट अ लेसर वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर इम्पैक्ट रेनफॉल का आएगा, इम्प्योरिटीज नीचे जाएंगी और वो ब्लॉक कर देती है वॉइड्स को, जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है. चलिए, now this one. Now here rainfall is happening of 2.5 centimeter and 6 centimeter. So total rainfall हुई 8.5 centimeter. Now there is a area 4 hectares. Here the phi index is 3 centimeter per hour. 10 hectares area, phi index is 3 centimeter per hour. 6 hectare area, phi index is 1 centimeter per hour. It is asking you the total net rain for 2 hours. ठीक है, आज सिंगल इनफिल्ट्रोमीटर का ज्यादा होगा. क्या रिपीट करूं अब है, क्या रिपीट करूं बेटा? तो जो नेट फाई है यहाँ पे वो होगा फाई A1 प्लस फाई 2 A2 प्लस फाई 3 A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3. तो 3 into 4 plus 3 into 10 plus 1 into 3, and total area is how much? 4 plus 10 plus 16. So you will get the net phi index from here. First calculate that. कितनी आ रही है net phi index? weighted average निकालना, बट आ कितना रहा है? 2.4. Now you know phi index average infiltration above which rainfall volume is equal to runoff volume. Precipitation 8.5, रन ऑफ निकालो यहाँ से, 2 घंटे की बारिश हुई ना, आवरली रेनफॉल. सॉल्व इट, कितना आएगा? 3.7. ये इसमें अगर मेरे से ये पूछ रहे थे अबे रेनफॉल सिमुलेटर में क्या होता है, एक प्लॉट एरिया लेते हो जैसे 4 मीटर बाय 2 मीटर. ओके, इसमें यू अरेंज अ सीरीज ऑफ नोजल्स ऑन द लार्जर साइड एंड आप आर्टिफिशियल रेनफॉल, जैसे फिल्मों में कराते हैं ना आर्टिफिशियल रेन, वैसे आप रेन कराते हो. और फिर आपको पता है, क्योंकि बारिश आपने करवाई, आप सब चीजें आपको पता होती है सिवाय इनफिल्ट्रेशन के. तो जब आपको पता है ना इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, तो इससे आप इनफिल्ट्रेशन निकालते हो. अब क्या होता है, ये बारिश जब आप करा रहे हो तो आप कोशिश कर रहे हो कि ये नेचुरल बारिश जैसे हो. तो जब बारिश होती है बेटा, तो ये मिट्टी को, जब ये सरफेस पे आती है तो मिट्टी को डिस्प्लेस करती है, इम्प्योरिटीज को भी. तो ये पार्टिकल्स ग्राउंड के नीचे वॉइड्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं जा पाता, तो इनफिल्ट्रेशन कम निकल के आता है. तो अगर इनफिल्ट्रोमीटर्स में आप कोई बारिश नहीं करवा रहे थे, आप खुद से पानी डाल रहे थे बस, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर आप रेनफॉल का इम्पैक्ट ले रहे हो और रेनफॉल के इम्पैक्ट के कारण अगर फाइन पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेस होंगे तो इनफिल्ट्रेशन कम निकल के आएगा, इसलिए रेनफॉल सिमुलेटर से आपको इनफिल्ट्रेशन कम मिलता है. क्लियर? चलिए, दिस क्वेश्चन. A catchment has a slope 0.006, maximum length of travel 950. It is asking you time of concentration using Kirpich equation. अब यहाँ पे किरपिच इक्वेशन सॉल्व करो तभी बनेगा आपको ये फॉर्मूला. अगर नहीं पता 0.01947, पहले तो खुद सॉल्व करो, पता चला मेरा देख के सॉल्व कर रहे हो तो क्या मतलब. दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. जस्ट फॉर्मूला बेस 0.01947, बट फिर भी डूइंग इट इन अ वर्चुअल कैलकुलेटर इज अ टास्क. फिर भी इतना इजी नहीं है. 0.006 minus 0.385. Come on, how much it will come? So this is the formula of time of concentration using Kirpich's equation. Remember that. ठीक है, चलो. 93 question. The data for an agricultural field for a specific month is given to you. आपसे पूछा कितना irrigation water अप्लाई करना है. सबसे पहले वील चेक इट आउट दैट कंजम्पटिव यूज कितना रिक्वायर्ड है. क्रॉप कोएफिशिएंट इनटू पैन एवेपोरेशन, वी रिक्वायर 40 mm, बट जब 40 mm रिक्वायर्ड था
तो 20 mm की बरसात हो गई. So net water which you required is how much? 40 minus 20. 20 mm you required. But if you will supply 20 mm, 10 mm जाएगा. That means you need to supply more amount of water. Why? Because irrigation efficiency is 50%. तो अगर 50% है, so that means you need to supply more amount of water. That means how much? 40 mm. क्लियर जागृति, करेक्ट. ऐसा फॉर्मूला बेस्ड आया तो ऐसे तो याद ही नहीं था. चलो कोई बात नहीं. Okay, this question. Two water samples are there. अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. You can answer it yourself. बस दिखने में लेंदी लग रहा है. Two water samples are there, X and Y. They are collected from a sewage treatment plant. सैंपल X को आपने सीवेज ट्रीटमेंट में जाने से पहले इनलेट में कलेक्ट किया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ होने के बाद, कंसिडरेबल साफ होने के बाद आपने Y कैलकुलेट किया, कलेक्ट किया सैंपल को. बताओ क्या चीज सही है? व्हाट इज करेक्ट? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाने से पहले यू हैव कलेक्टेड सैंपल X, व्हाइल आफ्टर गोइंग यू हैव कलेक्टेड सैंपल Y. Correct? जाने से पहले you will have more coliforms as compared to when it is coming out. So B is the correct one. Okay. 95th question. This is estimation method and the indicator used. Which is the one which is wrong indicator is used? गलत indicator किसमें use हुआ है? Winkler's method, correct, you use starch. Dichromate, you use ferroin. EDTA, ना EDA. D गलत होगा ना. मोर्स मेथड, वो क्या बोलते हैं, क्लोराइड निकालने के लिए. मोर्स मेथड, व्हाट यू यूज? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CrO4. वो तो टेस्ट आपने देखा होगा, पूरा सफेद रहता है और आपको रेड रेड ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. सफेद में रेड अलग से दिखता है, व्हाइट में रेड. ओके, सो K2CrO4 यूज करते हो आप. यहाँ पे व्हाइट ले लेते हो. करेक्ट. सो D इज द वन विच इज इनकरेक्टली मैच्ड. चलो, नो दिस वन. Disinfection efficiency of chlorine and water treatment plant. चलिए बताइए. मैंने लिख भी दिया. If it is more than 5, then only it will convert to hypochlorous acid. Less, it will remain molecular chlorine. HOCl more than 8, it will convert into hypochlorite ion. क्या होगा? डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी, जैसे जैसे पीएच बढ़ता है डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. अब आप बोलोगे मैम बट अगर पीएच कम हो जाएगा तो क्लोरीन ही बना रहेगा ना. हम जनरली 5 to 7 की पीएच की बात करते हैं, वेयर हाइपोक्लोरस एसिड इज प्रीडोमिनेंट. 7 के बाद आप पीएच बढ़ाओगे, हाइपोक्लोराइड आयन इज देयर व्हिच इज 80 टाइम्स लेस पावरफुल. सो डिक्रीजेस, रिड्यूसेस बाय इंक्रीज्ड पीएच वैल्यूज. क्लियर? चलिए सब इंक्रीज कहां से होगा? हम लोग अब ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, ये वाला यहां पे कंसिडर कर रहे हैं. 5 to 7 हाइपोक्लोरस एसिड, 7 to 8 पीएच हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयन, और पीएच 8 से ज्यादा ओनली हाइपोक्लोराइट आयन. सो वी आर अज्यूमिंग दिस पोर्शन. ठीक है, 5 से पहले वाला नहीं ले रहे पीएच का. चलिए 97. इन वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस द पर्पस ऑफ recarbonation after using lime soda process is. recarbonation क्यों करते हैं? ताकि जो भी प्रेसिपिटेट बचा है वो soluble फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. करेक्ट. ओके. इफ यू हैव इंक्रीज द फ्रिक्शन फैक्टर 0.01 से 0.02 कर दिया, so सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी क्या होगी? If you don't remember the formula, this is the formula. They are inversely proportional. सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी क्या होगी? VSC2 क्या हो जाएगा? करेक्ट, वेरी गुड साईराम. 1/√2 टाइम्स हो जाएगा of the 1/√2 टाइम्स of the initial one. That's very common. Okay.
Question number 99. You have to tell the correct one. Aerobic composting. Come on. द मेजोरिटी ऑफ द ओडर प्रॉब्लम अगर एरोबिक कंपोस्टिंग में आती है वो इसलिए क्योंकि अगर एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं करते हो टाइम से टाइम, तो एनारोबिक कंडीशंस पनपने लगेगी. ठीक है, करेक्ट है. ऑल ऑर्गेनिक कार्बन विल बी कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल इन 14 days. हो ही नहीं सकता. इनकरेक्ट. At high C by N ratio, ammonia will be released and biological activity may also be impeded. गलत, नहीं होता ऐसा. Optimum moisture content एरोबिक कंपोस्टिंग के लिए विल बी 50 to 60%. करेक्ट. अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छे से हो तो आप 50 to 60% आप मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करो. अगर आप लोअर करोगे तो जो प्रोसेस रेट होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस की वो कम हो जाती है. सो 1 and 4 आर करेक्ट. नहीं, बी नहीं है. अगर 2 and 3 आर इनकरेक्ट ऑप्शन में होता जुबैर, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट 1 and 4 आर करेक्ट इन दिस. लास्ट वन. Which of the following statements are true about activated sludge process? चलो. इसका आंसर मुझे लग रहा है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम. करेक्ट. एरिएशन टैंक इज यूज्ड. करेक्ट. नाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है. करेक्ट. रिसर्कुलेशन रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो. Recirculation ratio, remember ये बहुत famous question asked in many examinations. Recirculation ratio in activated sludge process is controlled by sludge volume index. Volume occupied in ml by 1 gram of suspended solids when allowed to settle for 30 minutes. Correct. Fine. So we have done the questions. हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस गाइस विद ऑल द मिक्सचर्स. फाइन. सो दैट्स इट. मैं कमेंट्स नहीं दिखा रहा, देखो यार मेरा नीचे का ही ब्लैंक हो गया. क्या हो गया इसको? ओके फाइन. सो दीज वर द 100 क्वेश्चंस एंड वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट टेस्ट फॉर यू गाइस. कल एक लास्ट, एकदम लास्ट, इसके बाद नो मोर टेस्ट फॉर यू गाइस. कल टुमारो लास्ट मिनी मॉक टेस्ट विल बी देयर एंड अच्छे क्वेश्चंस, जस्ट 1 hour सेशन. जब मैं 1 hour बोलती हूँ, जब मैं लेती हूँ तो मैं 1 hour बोलती हूँ. आज 50 क्वेश्चंस थे ना. मिनी मॉक टेस्ट टुमारो एट 11 AM. क्लियर? अभय ने बोला कि मैम 11 AM ही रखो, तो 11 AM ही रख रहे हैं. ओके. अनवर, जागृति, एवरीबडी, लास्ट टुमारो एट 11 AM विल बी द लास्ट मिनी मॉक टेस्ट. सो बी प्रेजेंट कल 11 to 12. और देखो अनवर, तुम्हारे खाने से पहले हमने कंप्लीट करा दिया. लास्ट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड मैं बस शेयर भी कर देती हूँ. And guys, we have launched full syllabus course both in English and Hindi language, so you guys can enroll for that as well. और क्या बोलूं मैं आपको, बस that's it. All the best. तुमने नहीं बोला था अभय? देखो मैंने सबकी बात पूरी की. अभय ने बोला 11 बजे रखो, मैं 11 बजे आई. उसके बाद अनवर ने बोला कि मैम 1 बजे मैं लंच करता हूँ, उससे पहले खत्म कर दो. मैंने खत्म कर दिया. अब जो तुम लोग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर देखना, तुम लोग की सब बात मानी जा रही है. और अभय बोला मैम सेशंस टाइमिंग बढ़ाओ, सेशन टाइम्स बढ़ गई. मैक्स ज्यादा क्लासेस लगाओ, लग गई. तुम लोग को अच्छा परफॉर्म करना है पेपर में, ठीक है? अपने साइड से अच्छा करना है. क्लियर? जागृति, अब एवरीबडी. चलो, सो विल मीट यू टुमारो, लास्ट क्लास फॉर योर बार्क एट 11 AM. ओके. चलो, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट नहीं है, गुड मॉर्निंग है. चलो, ओके, बाय.